हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल से ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। पिक्सेलैब ओपन करके सबसे पहले आपने एक शेप लेने हैं। फिर इस शेप के लिए आपने एक कलर चूज़ करना है और कलर चूज़ करने के बाद आपने उसको लॉक करना है। ओके, लॉक होने के बाद हम फिर से प्लस वाले निशान के ऊपर जाते हैं और उससे एक शेप लेते हैं। शेप को थोड़ा सा रिसाइज करते हैं। देखिए आप, तो रिसाइज करने के बाद हमने इसको इसकी बिल्कुल बीच में लगाना है। ओके, ये शेप अभी कंप्लीट हो गया। हमने अभी दोबारा एक और शेप लेनी है ताकि हम इसके नीचे बैक साइड पे इसका शेडो बना सके। आप देखिए। ओके, दोबारा जो मैंने शेप लिया है अभी इसको मैं रिसाइज कर रहा हूँ। बहुत ही छोटा कर रहा हूँ इसका साइज़। देखिए, अभी मैं इससे एक शेडो बनाऊँगा। इसके बाद मैं इसका अभी एक कलर चूज़ करता हूँ। मैं इसके लिए ब्लैक कलर लेता हूँ। देखिए आप, ब्लैक कलर लेने के बाद आपने इसको बहुत ही छोटा करना है और फिर से आपने जाना है शेडो पे। इसके लिए आपने एक शेडो लेनी है। देखिए आप, ये मैं शेडो ले रहा हूँ। ओके, तो शेडो लेने के बाद मैंने वेब इसके बैक साइड पे रखना है नीचे। देखिए, मैं इसको फिट कर रहा हूँ अभी। ओके, ये यहाँ फिट हो गया। अभी मैं इसके लिए दूसरा इसकी कॉपी लेता हूँ। दूसरी कॉपी लेने के बाद मैं उसको भी नीचे फिट करता हूँ इस तरह से। ओके, तो फिट होने के बाद मैं अभी इसको जो नीचे वाला शेप है मैं उसको ऊपर लाता हूँ अभी। आप देखिए। ओके, तो इसी तरह से मैं और शेप लेता हूँ और उसकी काफ़ी बनाता हूँ और इसका एक प्यारा सा डिज़ाइन मैं बनाता हूँ। आप देखिए वीडियो में और एंजॉय करें।
till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.